Welcome to Power System Protection lecture series. Today we are going to discuss plug setting multiplier and time setting multiplier, which is important terms and it is related to our numerical methods. We have discussed in previous lectures that overload and overcurrent relays, its characteristics, how it works, its principles, and different type of characteristics and its operation time. Now, what is pickup current? Pickup means जो वैल्यू पे रिले पिकअप होता है और ऑन होता है. The current for which the relay initiates its operation is called pickup current of the relay. We can say current setting भी बोल सकते हैं. Current setting of relay is expressed in percentage ratio of relay pickup current to the rated secondary current of the CT. As you know, the CT is connected with the series and it is connected, the secondary is connected to the relay. So first of all, करंट जो भी है वो रिले में आएगा, सिटी में आएगा और सिटी की सेकेंडरी से होके रिले में जाएगा. रिले पिकअप होगा और ट्रिप कॉइल को एनर्जाइज करेगा. ट्रिप कॉइल सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट ओपन करेगा. So this is the channel. Now focused on the channel and we will discuss the current setting. So current setting is equal to pickup current and rated secondary current of CT. Now how we can differentiate the two relays, overcurrent and earth fault. Now 25% के गैप में जो भी रेंजेस होगी, जो भी परसेंटेज होगा, मीन्स 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 175%, 200%. These are the current setting of overcurrent relay with the gap of 25%. And for the earth fault relay, the gap is 10% and it is starting from 10% to 70%. So 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. These are the earth fault relay current settings. So we can differentiate the two relays with recognized of this current setting. Now plug setting multiplier. Plug setting multiplier we can calculate with this formula. जो भी करंट रिले कोइल में आएगा वो नॉर्मल करंट होगा, फिर तो रिले ऑपरेट होगा नहीं, तो फॉल्टी करंट इन अ रिले कोइल. एंड जो भी करंट पे रिले पिकअप होगा वो पिकअप करंट. सो PSM is fault current in a relay coil upon pickup current. And you know that pickup current is rated CT secondary current into current setting. We can find out the pickup current which is rated CT secondary current into current setting. जो भी CT secondary है, जो भी CT secondary का करंट है वो करंट into जो भी हमारा करंट सेटिंग हमने लिया गया है उनको मल्टीप्लाई करके हम पिकअप करंट फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ सपोज CT रेशियो दिया गया है 200 जेम 1 एम्पियर एंड करंट सेटिंग दिया गया है 150%. तो पिकअप करंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? सी 200 जेम 1, so 1 ampere is a secondary current into this is a 150%. So
1 into 150% means 1.5 ampere. So suppose fault current in a CT primary is 1000 ampere. So जो 1000 एम्पियर होगा वो पहले CT प्राइमरी में आएगा और रेशियो के हिसाब से 1000 इंटू 1/200 इज इक्वल टू 5 एम्पियर. 5 एम्पियर जो है वो CT की सेकेंडरी में जाएगा. सो PSM ऑफ द रिले इज 5 means fault current upon pickup current, that is 1.5. So 3.3 is your PSM, plug setting multiplier. Okay, now time setting multiplier of relay. After calculation of PSM, we have to calculate the time setting. So time setting depends on 2 points. First, how long the distance to be traveled by moving parts of the relay for closing the relay contacts. जो डिस्टेंस डिस्क कवर करेगा वो कितना डिस्टेंस है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, हाउ फास्ट द मूविंग पार्ट्स ऑफ द रिले कवर दिस डिस्टेंस, मीन्स डिस्क कितना फास्ट रोटेट करेगी वो कॉन्टैक्ट को क्लोज करने के लिए. सो फर्स्ट पॉइंट इज डिस्टेंस and second point is speed. So far, by adjusting the relay operating time, both the factors to be adjusted. The adjustment of traveling distance of an electromechanical relay is commonly known as time setting. ये दो पॉइंट्स को जब हम एडजस्ट करते हैं तो उनको बोलते हैं टाइम सेटिंग करना. This adjustment is commonly known as time setting multiplier. जो भी वैल्यू आती है वो time setting multiplier है. The time setting dial is calibrated from 0 to 1 in the steps of 0.05 seconds. But by adjusting only time setting multiplier, we cannot set actual time of operation of the relay. हमें कर्व को ध्यान में रखते हुए और कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए टाइम सेटिंग करना है. सो द टाइम सेटिंग ऑपरेशन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ ऑपरेशन. स्पीड ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ रिले डिपेंड्स ऑन द फोर्स ड्यू टू करंट इन द रिले कोइल, एंड हेंस इट इज क्लियर दैट स्पीड ऑफ ऑपरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल रिले depends on the level of fault current. fault current का लेवल कितना है उस हिसाब से मूविंग पार्ट्स रोटेट करेगा, उतनी स्पीड से मूविंग पार्ट्स रोटेट करेगा. जितना ज़्यादा फॉल्ट होगा उतनी ज़्यादा स्पीड से मूविंग पार्ट्स ओपन कॉन्टैक्ट को क्लोज करने के लिए रोटेट करेगा. इन अदर वर्ड्स, द टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ रिले depends upon plug setting multiplier. The relation between time of operation and plug setting multiplier is plotted on a graph paper and it is known as time versus PSM graph. Now, from this graph, one can determine the total time taken by the moving parts of an electromechanical relay to complete its total traveling distance for different PSM. उस ग्राफ से जो कंक्लूजन निकलेगा वो ये कंक्लूजन है कि अलग अलग करंट सेटिंग, मानो कि 125%, 150%, 175%, अलग अलग करंट सेटिंग पे अलग अलग PSM होगा. वो अलग अलग डिफरेंट PSM प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर पर डिस्क जो रोटेट करती है वो कितना टाइम लेंगे. तो ये ग्राफ से एक कंक्लूजन आएगा. इन टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर द टोटल ट्रैवलिंग डिस्टेंस, जो भी उनको डिस्टेंस करना है, इट इज डिवाइडेड and calibrated from 0 to 1
in the steps of 0.05. मूविंग पार्ट को कितना डिस्टेंस लेना है वो 0.05 के गैप में 0 to 1 के स्टेप्स पे डिवाइड होगा. So when the time setting is 0.1, it is concluded as the moving part of the relay have to travel only 0.1 times of the total traveling distance to close the contact of the relay. अगर टाइम सेटिंग 0.1 है तो जो मूविंग पार्ट है उसको 0.1 टाइम ही टोटल ट्रैवल डिस्टेंस करना होगा. So if we get the total operating time of the relay for a particular PSM from time versus PSM graph, if we multiply that time with the time setting multiplier, we will get the actual operation time. And finally, we got the PSM and TSM. एग्जाम्पल से थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं हम. फॉर गेटिंग द क्लियर आइडिया, इफ रिले हैज अ टाइम सेटिंग इज 0.1 and if we calculate the time of operation for PSM 10, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर 10 है और टाइम सेटिंग 0.1 है. सो फ्रॉम टाइम वर्सेस PSM ग्राफ, total operating time is 3 seconds. Now that means moving parts of the relay take total 3 seconds to travel 100% traveling distance. पूरा 100% डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 3 सेकेंड्स चाहिए और ये 3 सेकेंड्स हमको मिला है टाइम वर्सेस PSM ग्राफ के ऊपर से, जहाँ PSM हमको दिया गया है 10 और टाइम सेटिंग हमने रखा है 0.1. So as the time setting multiplier is 0.1, actually the moving parts of the relay have to travel only 0.1 into 100% or 10% of the total travel distance to close the relay contact. So 0.1 जब हमने रखा है तो 0.1 टाइम ही उसको मूव करना होगा, मतलब कि जो भी डिस्टेंस है उसका 10% डिस्टेंस ही उनको मूव करना होगा. Hence, actual operating time of the relay is 3 into 0.1 is equal to 0.3. So 0.3 seconds लगेंगे उसको उतना डिस्टेंस कंप्लीट करने में. So 10% of 3 seconds, जहाँ पे ये 3 seconds आया तो उसका 10% ही डिस्टेंस इतनी सेकंड में कवर होगा. This relation curve between operating time and clock setting multiplier of an electrical relay. On x-axis, the time versus PSM graph represent PSM, and on y-axis, the time of operation relay. The time of operation represents in the graph that is required to operate the relay when time setting multiplier set at a 1. So here you see that time current characteristic for different time setting of relay. In y-axis, operating time in seconds like 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 1, 2, 5 to 10, and current plug setting multiplier that 1, 2, 3, 4 to 20. Here टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग जो भी हमने पहले किया हुआ है 0.1, 0.2, 0.4 to 1. So this graph, from this graph we have to calculate the total operation time of the relay. So from this graph, if PSM is 10, the time taken for the operation of relay is 3 seconds. That means the relay will take 3 seconds to complete its operation
with the time setting of 1. अगर टाइम सेटिंग 1 रखा है और PSM हमारा 10 है तो पूरा डिस्टेंस कंप्लीट करने के लिए मूविंग पार्ट को 3 सेकेंड्स लगेगा. नाउ it is also seen from this curve for a lower value of plug setting multiplier, for a lower value of fault current, the time of operation relay is inversely proportional to the fault current. जितना fault current ज़्यादा होगा उतना जल्दी से speed of operation होगा. But when PSM becomes more than 20, the operating time of relay becomes almost constant. The operating time of relay becomes almost constant, and this feature is necessary to ensure discrimination on very heavy fault current flowing through sound feeders. So now we studied the thoroughly calculation of relay operating time stepwise. So first step is to set the current setting, then know the fault current level, then what is the ratio of current transformer, then see time and PSM curve, and then get time setting. Step 1, from CT ratio, likewise 100/1, then secondary current CT is 1 ampere. Okay, then if the relay setting is 150%, then what is a pickup current? So pickup current is CT secondary current into current setting. So 1.5 ampere will get a pickup current. So जो भी रिले लगा हुआ है उनका पिकअप हो जाएगा 1.5 एम्पियर. नाउ स्टेप 3, कैलकुलेट द PSM. पर कैसे? PSM कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाट इज फॉल्ट करंट लेवल. सो इफ फॉल्ट करंट लेवल इज 1500 एम्पियर, then 1500 ampere comes into primary, then what is comes into secondary? So we can calculate 1500 upon 100/1. So 15 amperes come into secondary when fault occurs. 15 एम्पियर जो कि सेकेंडरी में आएगा, सिटी सेकेंडरी में, तो वो हो जाएगा रिले फॉल्ट करंट. सो नाउ फ्रॉम द इक्वेशन PSM इज इक्वल टू रिले फॉल्ट करंट अपॉन रिले पिकअप करंट. रिले फॉल्ट करंट हमारा क्या आ जाएगा? 15 एम्पियर एंड रिले पिकअप 1.5 एम्पियर. सो PSM हो जाएगा 10. Now step 4, see the time versus PSM graph, and we can find that on 10 PSM the total distance is about 3 seconds. The time of operation of relay is about 3 seconds. Okay. So finally the operating time of the relay would be multiplied with time setting multiplier in order to get actual time of operation relay. Hence say time setting of relay is 0.1, जो हमने 0.1 टाइम सेटिंग रखा है, तो actual time of operation is on the PSM of 10 is 3 into 0.1, that is 0.3 और 300 microseconds. So ये हो जाएगा हमारा relay operation time. So these are the steps that how we
calculate the total operation time of the relay. With calculating the current setting, then pickup current, then plug setting multiplier, then time versus PSM graph, then calculate the total operating time of disk, then calculate the total operation of time with time setting multiplier, and then we know that total relay operation time is 0.3. So this is the learning about PSM and time setting multiplier. So for now we can resume here, and later on we will study about different relay PSM and TSM settings and numerical of these relays. Thank you.